Dear students, in this unit, we will learn about the last function of management, that is controlling. This unit will describe to you what is controlling, what is the importance of controlling, what is the control process, what is the relationship between planning and controlling. Students, business organizations को different तरह के operations perform करने होते हैं और अगर ये operations ठीक तरह से perform ना हो, end result expectations के according नहीं हो सकता. Managers को ये रेगुलरली इंश्योर करना पड़ता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो वही कर रहे हैं जो उनसे डिजायर्ड है और वो किसी भी काम करने को उतना ही बजट यूज कर रहे हैं जितना उसके लिए प्रोवाइडेड है और फाइनली प्रोडक्ट उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बन रहा है जिसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन हुआ था. तो ये सारी चीजें जिसमें ये इंश्योर करना है कि क्या चीजें ठीक समय पे, ठीक बजट में और ठीक तरीके से हो रही हैं कि नहीं, इसी को हम कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. लेट मी फर्स्ट डिफाइन टू यू द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड्स टू सी whether the performance is as per the standards or not, and if the performance is not as per the standards, then there are some deviations and a manager has to ensure that these deviations are corrected. The essence of controlling is to ensure that organizational objectives and plans are accomplished, are achieved as per the original plan. So we can conclude control consists of seeing that everything is being carried out as per the plan which was adopted earlier. Students, sometimes people confuse control with supervision. Supervision एक्चुअल में कंट्रोल का एक हिस्सा है. सुपरविजन पूरा कंट्रोल नहीं है. कंट्रोलिंग सुपरविजन से बहुत देर पहले शुरू हो जाती है और उसके बहुत देर बाद तक चलती है. Let me first explain to you what is the importance of. The first importance associated with controlling is कि through controlling we make the plans effective in their implementation. So हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि वो डायरेक्शन रेगुलरली फॉलो होती रहे. कंट्रोलिंग के जरिए ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आती है क्योंकि कंट्रोलिंग के जरिए ही हम ये इंश्योर करते हैं कि क्या चीज़ें समय पर हो रही हैं और सही तरीके से हो रही हैं ताकि कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस ना हो और हमें रीवर्क करके सेम चीज़ों को दोबारा प्रोड्यूस ना करना पड़े. कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि हमें इससे एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू वर्क क्रिएट करने में बहुत हेल्प मिलती है. एंड लास्टली, controls ensure consistency. Now I will describe to you the entire control process in detail. The first step of control process is to establish the performance standards. What are the standards? The standards are specifically defined terms in which we describe the outcome. For example, we want to create a product which is 5 centimeter in length, 3 centimeter in width and 2 centimeter in height. So it means these are the standards for that product and every product should be made as per these standards. The second step involves measurement of the performance. अगर हम उसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलें तो हम अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि क्या इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, क्या जो प्रोडक्ट बना उसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर है और क्या उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है. अगर ये स्पेसिफिकेशंस जो हमारे ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स में थी क्या वो सेम परफॉर्मेंस में आ रही हैं कि नहीं, ये हमें पता चलता है स्टेप नंबर 3 में, when we actually compare the performance with the standards. So on one side are the standards and on the second side is the performance
and we compare to see whether the performance matches the standards or not. Students, at this stage, we come to know that is there some deviation? Is there some change from the standards or not? For example, we might be making the product which is not 5 centimeter in length but 4.5 centimeter. So there is a deviation. So we have to see whether this deviation or change from the standard is acceptable or is not acceptable. And if this change from the standard is not acceptable, then we move to the fourth step of the plan, that is taking the corrective action, so that जो ये significant deviations हुई हैं इनको रिमूव किया जा सके. हो सकता है हमें अपने प्रोडक्ट की सेटिंग चेंज करनी पड़े, हो सकता है हमें अपने मशीन की सेटिंग चेंज करनी पड़े, हो सकता है हमें रॉ मटेरियल चेंज करना पड़े. सो वी विल डू a cause and effect analysis to see how we can correct the deviations so that performance is as per the standards. At this stage, a manager can take two different possible courses of action. One is they can change the performance to the standards, or they might revise the standards. हो सकता है कि शुरू में जो स्टैंडर्ड सेट हुए वो ठीक ना हुए हों, वो गलत सेट हो गए हों, या जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक वो स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट ना हो. सो वी हैव सीन दैट द कंट्रोलिंग फंक्शन is extremely important to produce the quality, because quality involves consistency. So the control function ensures that there is a consistency in the performance by regularly measuring the performance and comparing it with the standards and correcting the deviations if they occur at any point of time. Students, in order to implement the controls, broadly, there are 5 types of control systems: budgetary controls, financial controls, quality controls, inventory controls, and operations controls. Let me explain to you budgetary control. ये वो controlling function है जो बजट को एक सिस्टमेटिक वे में इंश्योर करता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, वो ओरिजिनल बजट के अकॉर्डिंग रहें. मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू में ये स्टैंडर्ड बनाया कि इन द कमिंग ईयर दे शुड अर्न 100 करोड़ एज अ रेवेन्यू, फॉर विच दे शुड हैव 70 crores as an expense. So now this budgetary control will ensure throughout the year that whether the organization is spending what it thought that it will spend, and whether the organization is earning what it wanted to earn.